Dr. Thank you, Neeta ma'am. Bhatla ma'am has already joined And us and she will start her session from 4 o'clock. मैम एक प्रश्न है आपसे. We welcome Dr. Neeta Bhatla ma'am. Actually, we will take all the queries in next session. We will very soon we मैम will एक प्रश्न schedule है. a separate session, right? And at present, this is the session for counseling session, so we cannot devote time to other queries except content related material. Dr. Neeta Bhatla ma'am is already Ah, at the platform. We welcome you from Ignorita Satyalakshmi, and you may start the session. okay, ma'am. Can I Okay, leave, ma'am. ma'am? Thank you, ma'am. Respected RD madam, can I leave now? No. Yes, Tapan sir, thank you Thank you. very much. Thank you so Thanks a much, lot. ma'am. Wish you all the best. Thanks for Dear learner. replying to questions, sir. Okay. Thank you, ma'am. ma'am, should I start? Yes, Dr. Neeta, you may start the session. Okay. Good afternoon to all of the members who have joined for the session on social processes and behavioral issues today. I'll be discussing social processes and behavior. First, let us just have an overview of what is social process and what is behavior, and then I'll share my slide also. Social processes basically are, am I audible? Yes, Yes, ma'am, you are audible, ma'am. audible, Yes. ma'am. Clearly audible. Okay, thank you, ma'am. Social processes are basically made up of the social interaction which we have in the society, the communication which we make. We are all living in a society. Either we are in a whether it is in an informal setting or it is in a formal setting, we all are there, and we are interacting with the other individuals, all of them. The kind of relationships we share with them, whether we are in a friendship group, whether we are in a peer group, whether we are in a social, whether we are working with our colleagues, whether we are working with the other teammates, or we are at home also with our brother, sister, relative, friends, acquaintances, and anyone. We are having a kind of a relationship and a social interaction, a kind of relationship with each other in the, whether it is in the organization or elsewise. Those are the social, those means the social process. Let me just have a, let me first share my slide also. Social processes are basically the ways in which individuals and groups interact, adjust and readjust and establish relationships, patterns of behavior, which are again modified through social interactions. Means how the people are interacting with each other, whether in the society or whether in the organization. Not only you are having relationships with your formally in the organization, but also you are sharing informal relationships also exhibit in the organizations. Now, the type of social processes that take place in an organization, the elsewise, social processes हो सकते हैं कि whether they are positive or they are negative. Accordingly, they could be classified as associative or conjunctive processes and dissociative or disconjunctive processes. So associative processes are basically, associative processes involved are those which are work for the solidarity and the benefit of the society. These basically, like you, while you are working in a team, you are cooperating your team members, you are working in collaboration with them, you are working in association with them. Cooperation means together. Nothing, it is said, united we stand and divided we fall. So जब भी हम कभी काम करते हैं तो हम एक टीम वर्क में और टीम स्पिरिट में काम करते हैं. Means how we are working together to the achievement of
common goal or objective. So when two or more persons work together to gain a to attain a common goal or objective, then it is cooperation. Cooperation would be, sometimes it would be a direct cooperation, sometimes it would be a indirect cooperation. Direct cooperation may be included all those activities in which people do things together for while they are doing similar kind of work. Means if you are all involved in a kind of a group discussion on a similar topic, you are exhibiting a similar kind of behavior. Like it has been said, birds of the same feather flock together. Means those people who are having the same kind of a behavior will exhibit a good relationship bond. Second is indirect cooperation. Indirect cooperation is included those activities which people do unlikely together. Means sometimes you are criticizing the work of the other, sometimes you are creating a hindrance in the growth of the other. So that is a kind of an indirect cooperation. You're not cooperating with an individual. When you are working in a group or a team or in an association, you are not cooperating that individual, but in turn you are trying to exhibit a very wrong or an unkind behavior to that particular individual. So that is an indirect cooperation. So another is accommodation. Accommodation is basically achievement of adjustment between people that permits harmonizing, acting together in a social situation. Means accommodation is basically used by a sociologist to describe the adjustment of hostile individual or groups. Means how the various people are able to adjust in a particular situation. जब भी हम किसी particular situation में होते हैं तो हम किस तरीके से adjust करते हैं. That is more of it is being required. किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इट. एकोमोडेशन मीन्स हम किस तरीके से दूसरों के साथ एडजस्ट करते हैं, उनके ग्रुप गोल्स को, उनके इंडिविजुअल गोल्स को एस्पायर करने में, उनके प्रोसेसेस को अचीव करने में, किस so that conflict does not take place. Now conflict is what a very such kind of thing which keeps on going in our mind. Sometimes it is an intrapersonal conflict. Intrapersonal conflict होती है जो कि हमारे दिमाग में ही चल रही होती है. बहुत सारे ऐसे issues होते हैं जो हमारे दिमाग में continuously चलते रहते हैं. जब चाहे हम घर पे हो, चाहे हम ऑफिस में हो, कहीं भी हो, हमारे दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं. Sometimes it is an interpersonal conflict which is between one or two individuals who are it can be between one to one individual, it can be between one or two individuals. Sometimes it can be a group conflict between one group with the other group. Sometimes it can be a departmental conflict. So how to accommodate the individuals and the group goal interests so that problems do not occur in the organization, so that all the issues are being resoluted how they towards the achievement of the goal or objectives. Now sometimes the other is accommodation is basically a universal activity. It is not always moving on. You cannot say that you are accommodation is universally present, means it is present everywhere, and it is a conscious and unconscious process. Sometimes we become selfish with our own goals. कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसे करना है, तो हम बहुत ज्यादा अपनी एक उसमें बिजी हो जाते हैं. It's not whether we are at home or each and every person has a different kind of a lookout. Every person has a different kind of a perception. Every person has a different kind of a lookout. So every person's thought process is different.
तो जैसा उसका थॉट प्रोसेस होता है, जैसा वो उसकी सोच होती है, उसी तरीके का बिहेवियर वो एग्जिबिट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिवर्सल एक्टिविटी इसको इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इज बीन प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। Whether you are in the organization, you are accommodating the interest of the organization. The other is, it is a continuous process. It is working everywhere in the organization. जब भी आप कहीं काम करते हैं, कहीं भी कुछ exhibit करते हैं, तो it is moving continuously, and it is a mixture of both love and hatred in the organization. Then it is in collaboration with everyone. Is not going to love you whether you are at home or whether you are in an organization. So there will be different kinds of people who will be either having an hatred bond with you or would be having a love bond with you. Then there could be different methods or forms of accommodation. That is, one would be admissions of one's defeat. We will be able to accommodate. There are different people who are having a different kind of a role or in the thing, in the organization or at home also. When we are not able, we are able to think of that how things are going to happen, how we are going to put our interest away. Excuse me, Neeta ma'am. Yes, yes, yes. मैम हेलो मैम, मैं रीजन सेंटर से बोल रहा हूँ मैम। या सर बताएं। मैम आप ना मोबाइल रोटेट कर लीजिए, एक्चुअल में जो आपका कंटेंट है वो रीड नहीं हो रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। मोबाइल रोटेट करूं, रोटेट हाँ, करके अगर रोटेट कर लेंगी तो आपका जो पीपीटी है वो बड़ा हो जाएगा मैम। एक सेकंड, ये अब रोटेट किया। यस मैम, अब हो गया मैम, सही है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या बता दिया? Admissions of one's defeat. So basically when we are talking of admissions of one defeat is when we are just not moving to one's particular issues. Means हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा पीछे कर दूसरे की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, या हम दूसरे के गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने ही सेल्फलेस वे में हमें काम करना पड़ेगा। Then only we can say that we are admission in a one's defeat. Then other is compromise. When we are able to compromise in a particular situation. When we are not able to compromise, when we do not compromise in a situation, we are not accommodating the other's interest. तब क्या कर रहे हैं हम? अपने ही इंटरेस्ट को मीट आउट कर रहे हैं। We are trying to meet out our own interest. If we are doing that, if we are not compromising with the interest of the others, we are not compromising our interest. Each and every person's thought process is different, which I said. So हर person compromise नहीं करेगा, हर person नहीं सोचेगा कि वो compromise कर ले और वो आपके साथ adjust कर ले, accommodate कर ले आपके interest को, हर person नहीं करेगा। So compromisation is one way of accommodating the interest of the other individual. The other is arbitration and conciliation. Arbitration is where we are hiring the third party for settlement of disputes which arise in an industry or in an organization. Conciliation means, conciliation में हम क्या करते हैं? हम basically what we do is we come into a face-to-face contact on a table, and we there are conciliators which are being appointed, and they hear the entire process, and the matters are being resoluted over it. Tolerance is another very important thing. If you're not able to tolerate things in the organization, or if you do not have that kind of a patient behavior, चीजों को टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो आप एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कन्वर्जन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू convergent or you're not able to adjust in a particular situation. Now rationalization is another very important thing for you have to rationalize yourself.
You have to adjust yourself in that particular situation. Superordination and subordination. Sometimes there are superordination and subordination of interest and objectives. कई बार किसी के ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कई बार किसी के ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हम दूसरे को एडजस्ट नहीं कर सकते. So that is one of the superordination in the organization. Or sometimes we are not able to collaborate with the other persons in the organization. तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो मैचअप नहीं करती हैं और हम अपने आप को डोमिनेट करते रहते हैं पूरे टाइम. जब हमारी डोमिनेंस रहती है, तो जब डोमिनेंस रहती है तो हम चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. डोमिनेशन बहुत ज्यादा रहता है, हम डोमिनेट करते हैं दूसरे के इंटरेस्ट पे, हम हावी रहते हैं हमेशा. वो पर्सन जो है फ्री होके एक्सेल नहीं कर पाता है वर्ल्ड में. जब वो एक्सेल नहीं कर पाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, और ग्रोथ नहीं होती है तो उसके इंडिविजुअल गोल्स वो अचीव नहीं कर पाता. और जो पर्सन अपने इंडिविजुअल गोल्स अचीव नहीं कर सकता, वो दूसरे के साथ लगकर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं कर सकता. Thirdly is assimilation. Assimilation is basically a fundamental social process. It is that process by which individuals belonging to different cultures are united into one. Now, this is a very assimilation is basically when, like, if you are in an organization, like it is a multinational organization or it is a international corporation or international organization, where people are coming with, they're having their own culture, and people are coming from a different kind of cultures. They are having their own subcultures. Everyone is having their own roles, and how you are trying to mingle with the groups. So that is how you are trying to assimilate your interest, how you are trying to unite together so as to achieve the goals of that particular organization. Southern part mein agar a person from northern India when moving to the southern India will not be easily able to work out in that situation, because assimilation bahut important hai. Successful accommodation sets a stage for additional consequences of human interaction, namely that is assimilation. This implies a complete merging and fusion of two or more bodies into a single body, a process of analogous to digestion in which food is being assimilated. Means basically when you are जब खाना को फूड को डाइजेस्ट करना होता है, उसके भी सारे कंटेंट्स को अच्छे से आप च्यू करते हैं और वो अच्छे से आपका तभी डाइजेस्ट होता है, तभी वो बॉडी में मिक्स होता है. Similarly, for an organization also, if you do not, now here the group spirit or the team spirit is very important. Now, if the person does not have good group cohesiveness, good group team spirit or something like that in the organization, he is not able to mingle with the other group members in the organization. जैसे group cohesiveness higher होगी तो attractive forces ज़्यादा होंगे repulsive forces की बजाय. वो एक दूसरे के साथ एकजुट करके काम करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के साथ वर्क करने की कोशिश करेगा, एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा. और जब वो एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा तभी वो अपने दूसरे मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर पाएगा, तभी उसका ग्रुप कोहेसिवनेस हायर होगा, तभी कोऑर्डिनेशन होगा, तभी कोऑपरेशन आएगा, तभी वो एकोमोडेट करेगा दूसरे के इंटरेस्ट को. A person who is having a lot of ego issues, there are many people in this world who are having a lot of ego issues, who keep on justifying their interest, who are not able to tell about their own interest to the others in the organization, who are not able to assimilate with the other individuals in the organization. In that case, they will not be able to collaborate well. They will not be able to have a very good bonding with the other team members in the organization. तो वहां पे उनकी जो टीम स्पिरिट होगी वो कम हो जाएगी, और इसीलिए वो जो ग्रुप कोहेसिवनेस का इशू है वो नहीं आएगा. ग्रुप कोहेसिवनेस तभी आएगी जब वो उनकी टीम स्पिरिट हायर होगी.
So it is basically an associative process. Assimilation is an associative process because we are working in association with the team members of the organization. Assimilation is a universal process. Universal process इसलिए है because it has been present everywhere in the organization. हर जगह प्रेजेंट है. Assimilate होके हमें घर पे भी चलना पड़ता है और हमें बाहर भी चलना पड़ता है. कई बार हम घर पे भी लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ assimilate नहीं कर पाते हैं, अच्छे से मिक्स अप नहीं कर पाते हैं. नई जगह पे गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए तो बहुत अच्छे से मिंगल नहीं हो पाए उनके साथ ग्रुप में. बहुत अच्छे से एसिमिलेशन का मतलब है हम दूसरे के साथ अच्छे से मिंगल होके, अच्छे से कोलैबोरेट होके काम नहीं कर पाते हैं. जब हम दूसरे के साथ अच्छे से मिंगल नहीं होते हैं तो हमारा बिहेवियर वही आता है. Another is found at every place in the organization at every time. Then assimilation is a slow and a gradual process. Sometimes this assimilation is basically moving in a very slowly manner. बहुत धीमे धीमे काम हो रहा है और चीजें जो हैं कई बार लोगों के साथ कोलैबोरेट करना इतना आसान नहीं होता. बहुत जल्दी हम मिंगल नहीं हो पाते, बहुत जल्दी हम कोलैबोरेट नहीं कर पाते ग्रुप में, एंड बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस नहीं शेयर कर सकते ग्रुप की. एंड स्लोली वी आर एबल टू एस्पायर अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज. Then assimilation is a two-way process. It is based on the principle of give and take. It is a two-way process where we are not able to assimilate individually in the organization. Assimilation के कुछ figures होते हैं. Assimilation हम तभी कर पाते हैं, कुछ हम करेंगे, कुछ दूसरा करेगा. कई बार ऐसा होता है कि हम जिसके साथ ग्रुप में काम करते हैं वो सोचता है हम तो कर दें, लेकिन when his or her turn comes, then he does not do it. In turn, what the other person has, if he has a selfless approach, कर दिया, if the person thinks कि नहीं, I did it but he is not doing it, so the next time that person is not going to do. So assimilation तभी आएगा जब मैंने आपका कुछ किया, आपने मेरा कुछ किया, तभी हम अच्छे से कोलैबोरेट कर पाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो. Assimilation takes place when group individuals borrow cultural elements. Assimilation होता है जब हम ग्रुप इंडिविजुअल्स जो हैं एक कल्चरल सिचुएशन में वर्क करते हैं. कल्चरल सिचुएशन में जब हम दूसरे के कल्चर के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं. लाइक if you are moving to the southern part, they are having their own festivals, we try to mingle with them, we try to learn their values, we learn their culture. Even if we move out of India, there are everyone, they are having their own cultures, their own festivals, and if we assimilate, we work with them, we collaborate with them in a team. So there is a kind of आप अपनी life को भी enjoy करते हैं और those people also feel fine enough in that case. Then what are the factors that are conducive for assimilation? Now what has been very much been required for assimilation is toleration. Toleration is very much required. If you're not able to tolerate the other person, you will never be able to assimilate in a group. You will not be able to collaborate in a group. You will not be able to mingle in a group. अगर आप दूसरे की बात नहीं सुन सकते तो आप उस ग्रुप में एक साथ एकजुट होकर काम नहीं कर सकते. अगर हमारी अच्छी सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, अगर क्लोज सोशल कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितने सोशल कॉन्टैक्ट्स हमारे अच्छे होंगे उतना ही अच्छा हम मिंगल करेंगे. Then equal economic opportunity है, amalgamation है. These are all the ways of collaborating in a situation. Or if you are having a common physical traits, cultural similarity हमारी वही है, और we are moving to belonging to the same culture, sharing the same kind of physical traits, sharing the same kind of economic background. In that case also we are able to assimilate with the people in the organization. Now we'll be discussing about how the process of behavior takes place. Now how people respond to various kinds of stimulus. जब भी आप कोई चीज को देखते हैं, किसी पर्सन को बात करते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं there is something which is going in his mind, something which he or she is having in his mind.
Now what he or she is having in his mind, जरूरी नहीं है कि हर बार उसके दिमाग में कुछ हो. हर पर्सन की सोचने की, हर पर्सन की थॉट प्रोसेस का एक तरीका होता है. अगर when your thought process is different and his thought process is different, both the things are very should be on a similar track. Sometimes people are able to add different meanings to the stimulus. जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही सामने वाला आपको दिखेगा. वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, वो आपकी विचारधारा पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है. जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप देखते हैं. So the behavior takes place in the form of process. It is based on the analysis of behavior process over a period of time. There are three models of behavior which have been adopted. One is the stimulus reaction model. The other is stimulus reaction model, how the people react to the stimulus. It is basically the reasons of the inner feeling, motivation. कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी टेंस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, एंग्री होते हैं. It is a stimulus is like how you react to the heat, light, piece of information, etc., that directly influences the activity of an organism. Then another is SOR is basically model where O stands for organism in the classical SR model. SOR model is based on the stimulus processed by an organism and followed by a behavior, which is their reaction. How do they respond to that particular thing? So rather the O is viewed as a mediating maintenance and adjective function between an S and R. So basically it is a stimulus which has been how stimulus has been used by the organization. कैसे हम react करते हैं, कैसे किस चीज पे वो कोई theme है, किस क्या कोई picture है या कोई diagram है, किस particular theme पे वो based है, और उस थीम को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसको कैसे दर्शाया गया है, कैसे दिखाया गया है, और हमारा बिहेवियर उसके प्रति कैसा है, हमारी सोच क्या है. दैट इज SOR मॉडल. SOBA model is basically a comprehensive model of human behavior which combines SR, situation, and human being. O is in this model is not passive and imbibed, but it is a mediating, maintenance, and injective function between S and R. So S stands for stimulus, O for organism, B for behavior, and A for adjustive function. It is a adjustive function. Some people are able to adjust, shown that आपकी जो approach होगी वो आपके थीम में, आपकी विचारधारा में, आपकी थॉट प्रोसेस में दिखाई दे जाएगी. So in this, the S in this model stands for the stimulus or the external environmental situation. It includes light, heat, sound, actions, supervisor. Stimulus is more comprehensive and encompassing in nature. O in this model stands for organism, and it is O does not stand for physiological being. B stands for behavior, A stands for accomplishments and consequences. Sometimes the situation is very good, you are more motivated. Sometimes situation थोड़ी bad है. अगर किसी को थोड़े कम incentive मिले हैं तो उसका motivation, उसका morale level कम है, उसको बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा है. अगर वो कहीं पर्सनली हर्ट है या कहीं स्ट्रेस है, सो बहुत सारी चीजें हैं. आजकल इतना ज्यादा वर्कलोड है, सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू strike a balance between the personal and professional work plan. तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को हमें मीट अप करना पड़ता है. अगर हम अपने पर्सनल इश्यूज को पर्सनल प्लेस पे ही रखें और प्रोफेशनल को प्रोफेशनल पे ही रखें, बट समटाइम्स कभी कभी किसी जगह का स्ट्रेस दूसरे जगह पे हावी होता है और वो इफेक्ट करता है हमारे वर्क को, either whether it is in the personal situation or it is in a professional situation. Now SOBC model क्या है? SOBC model is incorporates a more complex mechanism where
which S stands for situation, O stands for organism, B is for behavior, and C for consequences. Now, this is which is more comprehensive than the stimulus. B stands for the pattern of behavior, whether it is some behavior are being seen. कुछ behavior आप ऐसे होते हैं जो आप तुरंत react करते हैं, कुछ exhibit होते हैं, कुछ नहीं exhibit होते हैं, कुछ आपके behavior में show हो जाते हैं, verbally आप कुछ और कह रहे हैं, non verbally कुछ और बताना चाह रहे हैं, and C is contingent consequences, that is both overt and covert. These are the kinds of behavioral models which we have discussed. Then to proceed further, what is social change and how do we respond to those social changes in the organization? जब भी कोई organization जो है किस change आते हैं organization में मैन पावर में चेंजेस आए, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन में चेंजेस आए, ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में चेंज आए, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में चेंज आए, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन में चेंज आए, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बॉस बदल गया, हमारे सबऑर्डिनेट्स बदल गए, हमारे साथ जो काम करने वाले पीयर्स थे वो बदल गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मिंगल होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनके साथ हमें कोलैबोरेट करना होता है. देन देयर आर चेंजेस इन द सोसाइटी आल्सो, जहाँ पे हम रहते हैं, अगर हमने वो जगह चेंज करी, हम दूसरी जगह पे गए, तो लोगों की जो बातचीत होती है, जो उनकी विचारधारा होती है, जो उनका थॉट प्रोसेस होता है, वो भी हम पे बहुत इफेक्ट करता है. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं तो जिस तरीके के कहते हैं द पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो जिस तरीके की कंपनी में आप बैठते हैं उस तरीके की ही आपकी विचारधारा होती है, उसी तरीके की आपकी सोच होती है. तो आपकी जो सोसाइटी होती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं. तो चेंज कई बार शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं और कई बार लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं. कई बार बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. कई बार एक छोटे से प्रोजेक्ट पे आपको काम करने के लिए बाहर भेज दिया गया 2 महीने के लिए. कई बार आपको किसी नॉर्थ में आप काम कर रहे थे, आपको साउथर्न इंडिया में भेज दिया गया या आपको अब्रॉड भेज दिया गया, तो सारी की सारी व्यवस्था ही पूरी की पूरी चेंज हो गई. अब सारी सिचुएशन आपके लिए बदल गई. जब आपके लिए सारी सिचुएशन बदल गई तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो आपके बिहेवियर में एग्जिबिट होता है. दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल चेंज. Now, what are the factors which are responsible for especially Indian society में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, like you have the influence, you have the adaptation occurs when existing institutions readjust to meet the new needs. बहुत सारे ऐसे छोटे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो आजकल क्लोज होते जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मीट द करंट सिचुएशन. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको वो नहीं मीट अप कर पाते, तो वो एक तरीका है. और अगर हम उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कई बार हम कई तरह के लोगों के साथ नहीं एडजस्ट कर पाते बिकॉज हम उनकी तरह की सोच नहीं रखते, उनकी तरह की विचारधारा नहीं रखते, उनकी तरह से कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं. Sometimes it is due to the influence of our education system. हमारी education जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, education system भी इफेक्ट करता है. Then another is marriage system. किस particular family को हम belong करते हैं, कहाँ पे हमारी marriage हुई है, क्या है. Changes in the family setup, कई बार बहुत छोटे changes होते हैं family में, कई बार बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं. जबकि न्यू मेंबर्स ज्वाइन करते हैं फैमिली में तो कई बार बहुत सारा के चेंजेस होते हैं. चेंजेस इन द सोशल सिचुएशन, सोसाइटल चेंजेस वी आर टॉकिंग ऑफ. चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ women. Changes in the position of women is basically when girl, how she is being brought up and how after her marriage how she moves to her in-laws place, what kind of behavior she exhibits, how she adjusts with them, because हर एक के घर का एक अलग वो होता है situation और वो किस तरीके से आप कोलैबोरेट करते हैं.
Are you able to see the slides and you am I audible also now? Yes, sir. Yes, madam. Audible. Okay. And the slides are also proper, no? Yes. Yes, Organization. madam. Yes, madam. Yes. Okay, thank you, thank you. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आपका इसका पार्ट है सोशल प्रोसेसेस का. जब भी आप किसी सोशल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, वहां का बिहेवियर हम कैसे एग्जिबिट कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेसिकली द एकेडमिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद इन ग्रुप्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स. Between groups and its academic study of how people interact within groups and its principles and are applied primarily in attempts to make businesses operate more effectively, which include areas of research which are dedicated to improving job performance, increasing job satisfaction, promoting innovation and encouraging promoting innovation, encouraging leadership, and is a form of corporate human resource. The kind of behavior you have in the organization means what kind of relationships you have in the organization with your superiors, subordinates, your peers, your colleagues, and those who are working with your organization. किस तरीके से आपकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कैसे आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. जितना कंजीनियल एनवायरनमेंट होता है उतनी अच्छी वर्क सिचुएशन होती है, उतना ही लोगों का मनोबल बनता है, उतनी अच्छा मोटिवेशन होता है, उतनी अच्छी आपकी जॉब परफॉर्मेंस होती है और उसी तरीके से हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है. तो उसी तरीके से हम एनकरेज करते हैं लीडरशिप भी हमारी उसी पे निर्भर करती है. लीडरशिप इज अ काइंड ऑफ shows that leaders are born not made. किस तरीके से आप किसी वर्क सिचुएशन में आप कैसे आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर क्या है. Being a manager, what is your influencing capability? How you are able to influence the other people who are there in the group. Now, what is the nature of of organizational behavior? It is basically a field of study, not a discipline only. It is a where you study organizational behavior. You will study various processes related to organizational behavior. You will be studying how people react, what is their perception, their attitudes, their beliefs, their values, their leadership issues, their changes, how they respond to changes, what is their organizational leadership, and various other things. And it is not only a discipline, because if it is a discipline only, then it will be only related, it draws concepts from psychology, sociology, anthropology, and various other disciplines. Then it is an interdisciplinary approach. Interdisciplinary approaches because it is related to various fields of study. It is an applied science. It is an applied science because we are using its concept in practice. जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हम उनको प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं. यू डोंट थिंक परसेप्शन है तो डेली एक लेमैन से भी पूछा जाए कि उसकी विचारधारा क्या है, उसका सोच क्या है, उससे पता चलता है कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी मानसिक मेंटल लेवल क्या है, वो कैसा सोचता है, उसका डेवलपमेंट कैसा है. देन नॉर्मेटिव साइंसेस and because it is related to the field of study, then it is a field of study also, and there is an application also. Then it is a total system approach because it is based on a system. Organization is a system, and the people who are working in collaboration, जैसे आपके people हैं, other things हैं, they are all subsystems. Then there is an humanistic and optimistic approach towards it. Whether it is a person behaves like all people who are working in an organization are all human beings. How they are collaborating with one another, how they are working in association with the other members in the organization.
Then what is the objectives of organizational behavior? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम इसलिए स्टडी करते हैं जिससे कि हम लोगों के थॉट प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर पाए, उनके मोटिवेशन को अंडरस्टैंड कर पाए, उनके बिलीफ्स को अंडरस्टैंड कर पाए, उनके वैल्यूज को समझ पाए, उनके एटीट्यूड्स को समझ पाए, उनकी विचारधारा को समझ पाए और वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जॉब सेटिस्फैक्शन। जब जॉब सेटिस्फैक्शन की बात होती है तो कैसे लोग बाग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनके बिहेवियर में पता चल जाता है। कैसा कौन काम करता है, कैसा वो रिस्पॉन्ड करता है, कैसा वो एग्जिबिट करता है बिहेवियर, तो वो उसका जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज बेसिकली द फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Whether the work is a favorable one, he will be exhibiting a positive behavior. If it is a work is a negative one for that individual, then he will not be exhibiting a negative, he will be job dissatisfied. जॉब सेटिस्फैक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं भाई, हो सकता है कि वो मॉनेटरीली सेटिस्फाइड हो सकता है उसमें कोई वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो, सैलरी बढ़ा दी 5,000 और उसके बाद उसके ऊपर वर्क डाल दिया 2 लोगों का ज्यादा। अब है तो इंसान ही और टाइम भी उतना ही, तो किस तरीके से वो काम करेगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये हर पर्सन डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। कुछ लोग सिर्फ टास्क को डन कर देते हैं, कुछ उसको इफेक्टिवली डन करते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो उसकी एफिशिएंसी से काम कर रहा है कि वो इफेक्टिवनेस से काम कर रहा है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो कितना आउटपुट हम जनरेट करते हैं, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो कैसे उसको जनरेट करते हैं। Then finding the right people is also another very important thing. Means identifying what people will be required, where they will be required in the organization. Then what kind of organizational culture are we are having in the organization, किस तरीके का कल्चर है, कैसा लोग बाग एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, कैसा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए क्या है, लीडरशिप मींस किस तरीके के हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे सुपीरियर्स कैसे हैं, उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर कैसी है, वो सबऑर्डिनेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, उनको गो थ्रू कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होती है। कॉन्फ्लिक्ट मैंने पहले ही बता दी है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, और बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के तरीके होते हैं, अकोमोडेशन है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, अवॉइडिंग है। तो ये सारी चीजें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं। देन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉइज बेटर, किस तरीके से हम एम्प्लॉइज को अच्छा बेटर फील करा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो परफॉर्म बेटर करें। जितना अच्छा फील करेंगे उतना ही बेटर परफॉर्म करेंगे, जितना खराब फील करेंगे उतना ही खराब परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर हम अच्छा फील करते हैं तो हम उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम अच्छा नहीं फील करते हैं तो उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप गुड लीडर्स। लीडर्स तभी अच्छे डेवलप हो सकते हैं जब पहली तो लीडरशिप क्वालिटीज होनी बहुत एसेंशियल हैं। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, एंड सम people are being given training, the adequate amount of training is being administered to the staff to become a good leader in the organization. Then how to develop a good team, that is also very important. Team will be only dependent if a leader is sharing a good bond with the other team members. Higher productivity isliye hogi, the more you are productive in the organization, the more you are performance आपकी effect use होती है प्रोडक्टिव अप्रोच के लिए। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उतना ही अच्छा हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसी तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट करती है। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? So it is basically what we are with individual differences hai, perception hai. Individual differences means each and every individual has a different kind of behavior. Each and every person is coming from a different kind of a situation, exhibiting a different kind of a behavior. Perception is another very important thing. Perception is your thought process,
how you react to the stimulus, what kind of behavior you exhibit. A whole person is another one. Motivated behavior, किस तरीके का behavior हम exhibit करते हैं. Sometimes we are very much motivated, which I told you that whether it is due to the monetary or non-monetary perceptive, sometimes we are having a monetary kind of things which are exhibiting which are exhibiting that kind of behavior. Sometimes we are not having we are having a different kind of an approach. Then the desire of involvement, किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ involve होते हैं, कैसे team work में हम involve होते हैं, कैसे हमारा team spirit generate होता है. Then value of the person क्या है, किस तरीके से, what are the values which are exhibited by an individual, किस particular family को वो belong करता है, क्या उसकी education system है, किस तरीके के culture से वो आता है, तो कैसी उसकी dignity है. Then another thing is organizations are social systems. Social systems are because all are working in a society. हमारा organization किस में खड़ा है, society में खड़ा है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंटरनल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो हमारे जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनकी विचारधारा भी हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही है, और बाहर से भी जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं. देन म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट. म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली कैसे हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो मिंगल करते हैं एक दूसरे के साथ. देन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, किस तरीके से हम इम्प्रूव करते हैं पीपल्स की स्किल को, कैसे हम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्क कल्चर्स, फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ एज, सेक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, हम उनको कैसे डाइवर्स वर्कफोर्स को कैसे डेवलप करते हैं. देन ग्लोबलाइजेशन को कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं. Then empowering people, coping with temperness. Then stimulation, innovation and change. Stimulating किस तरीके से innovation की जरूरत होती है, कैसे changes होते हैं. Then improving ethical behavior, किस तरीके से हम एक अच्छे behavior को exhibit करते हैं organization में, कैसे हम customer services को बढ़ाते हैं. Customer is always a king. If you do not service your customer well, you are not having a good kind of a behavior. Then किस तरीके से हम work life conflicts को balance करते हैं, कैसे उनको meet out करते हैं, तो वो सारी चीजें important हैं. Then what are the key forces which are affecting organizational behavior? There is a common set of key forces that are affecting organizational behavior. People है, structure है, technology, environment है. So these are basically these are the key forces that are affecting the organizational behavior. People who are working in the organization, the kind of structure the organization is having, किस तरीके के structure में आप काम कर रहे हैं, कैसा environment है, कैसे लोग हैं, कैसा आपस में उनका collaboration है, वो सारी चीजें important हो जाती हैं. Then what are the disciplines which are contributing, which I've already told you: psychology, sociology, social psychology, anthropology, political sciences and economics, which are contributing. Then you have the approaches to organizational behavior. The one is the human resources approach, means जब हम किसी भी situation में काम कर रहे हैं तो हमारे जो manpower है एक दूसरे के साथ collaborate कर रही है, हम एक system में काम कर रहे हैं, हम employees को एक human being की तरह consider कर रहे हैं organization में. Contingency approach is basically the situational approach in the organization, किस तरीके से हम respond करते हैं organization में. Productivity approach is basically how we reduce, what is the how we influence the others, or how we help the others to improve their performance in the organization. जब उनकी performance बढ़ती है तो हमारी भी productive तब organization की productivity work effect करती है. Then system is, organization is system. All people who are connected together in a system and who are associated together in a system, also they are all collaborating together in a system. That is also one of the very basic ways of saying that they are all collaborating in a system. So and people, there are various subsystems like people who are working together, what kind of rules and regulations which are affecting.
then how people are influencing each other, everything is affecting there. Those are the subsystems which are associated. This is all for today. So those who are having any queries with it, those who are having any queries with it. Anyone having any queries or any problems with the session of today? No queries, madam. Can you please share the PPT to us? Again? No queries from my side, madam. Can you please share the Uh, PPT? Am I supposed to share it to ma'am or I'm supposed to share it now? Hello? So may I know, am I supposed to share it just now or am I supposed to send it to the center? Anything is okay, madam. Anything is okay. Okay. Anything is okay. Okay. So we can exit or should I stay in the session? मैम एक बार आरती वालों से पूछ लीजिए. Let's see. Ma'am? Hello? RC Reena, madam. We have some general queries regarding our course and LMS. Can we discuss here now?
Reena ma'am, where is she? Reena ma'am? You don't have any queries related to the subject? मैम हेलो Hello, do you have any queries related to the subject? मैम हम लोग को क्वेरी कोर्स से रिलेटेड है जो कि एआरडी मैडम सॉल्व कर सकती हैं, तो काइंडली Okay, उनसे ज्यादा नहीं 5 मिनट का टाइम दिलवा दीजिए काइंडली. okay, okay. I've already sent a WhatsApp message to her. I don't know. Or else I have to exit and then only I can call her. Hello? हाँ मैम. Yes, Ma'am ma'am. is, hello, ma'am is telling that we can have another session for it. On the general issues that you are saying. Okay, it means now we can leave. That means we can leave now.